Jai Shriman Narayan. Good morning, kids. We are going to discuss the JEE Mains 2025, 24th shift, one morning shift. Paper moderate or better you can call easy and formula based. अब तक जो भी शिफ्ट हो चुके हैं, तीन शिफ्ट हो चुके हैं एंड उसका 6 पेपर हो चुके हैं. Almost all questions very, you can say moderate, paper moderate. डिफिकल्ट कैसे बोल रहे हैं हम लोग के लेंदी कैलकुलेशन. यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी कौन सा भी पेपर अभी तक नहीं आया फिजिक्स में, और बाकी 6 पेपर्स अभी बाकी है. वो भी यू कैन एक्सपेक्ट द सेम थिंग लाइक फॉर्मूला बेस्ड एंड यू शुड बी गुड इन ऑल द थ्योरी. तो जितना होता है आप अपना थ्योरी पढ़ लो एंड जितना होता है उतना फॉर्मूला आप मेमोराइज कर लो. यू कैन मैनेज दीज एग्जाम्स वेरी कंफर्टेबली. पेपर अब तक तो वी कैन कॉल इट एज इजी, डिफिकल्ट इन सेंस लेंदी कैलकुलेशन. तो कॉन्सेप्चुअल डिफिकल्टी कौन सा भी पेपर अभी तक नहीं आए, और बल्कि आउट ऑफ 25 में एक दो या एक क्वेश्चन शायद टफ रहेगा, बट रिमेनिंग 23 और 24 मैनेजेबल. तो बाकी बचे तो जो शिफ्ट है, प्लीज रिवाइज ऑल द थ्योरी एंड फॉर्मूलाज. दिस इज द गेम चेंजर. कुछ भी आपको डरने का जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज फॉर्मूलाज एंड जितना होता है उतना पढ़ लो. नो नीड टू सॉल्व PYQ. Even PYQ also may not be useful now at this stage. So we'll start the paper discussion. Okay, good morning, kids. This is the JEE Mains 2025, 24th morning shift or shift 1. मैं आपका श्रीधर सर, फिजिक्स लेक्चरर. यहाँ पे हम JEE Mains का पेपर डिस्कशन करेंगे. जस्ट विल ऑल्सो डिस्कस, यहाँ पे एनालिसिस भी कर लेंगे, लाइक what was the level of paper, everything. Thanks for great support, the journey in which I am moving, and lot of support is coming. Thank you very much. We'll start the paper discussion. यहाँ पे पहला question, the RMS value. So this particular topic, alternating current. If I equal sin omega t IB con, then the RMS value of current is. अगर आपको फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस वेरी इजिली. और एल्स आपको क्या करना है, लाइक यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ द बेसिक डेफिनेशन. व्हाट इज IRMS? IRMS स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ IA sin omega t IB cos omega t होल स्क्वायर dt 0 to t dt 0 to t. इसका एक्सपेंशन कर लेंगे. इसका एक्सपेंशन होने के बाद, सो दिस फर्स्ट विल, इसको एक्सपेंड करना पड़ता है हमें. देन दिस शुड बी इक्वल टू 1 by t RMS स्क्वायर इक्वल टू, ये तो हुआ IA स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt 0 to t IB स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t 0 to कैपिटल T dt. थोड़ा छोटा कर लेता हूं स्क्रीन. Then plus this will be IA IB 2 sin omega t cos omega t dt 0 to capital T. इसका इंटीग्रल वैल्यू IRMS स्क्वायर 1 by t. The integral of this one, इसका वैल्यू इंटीग्रल ऑफ sin स्क्वायर ओमेगा t dt will become 1 by 2. Okay, agreed. Then बाद में IB स्क्वायर, इसका इंटीग्रल वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा t इसका वैल्यू cos स्क्वायर ओमेगा t. This will also will become 1 by 2 plus IAB integral of 2 sin cos omega t. This value of this will be 0. और जब आप इंटीग्रेट करेंगे
So this should become 0. तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसे 0 होगा? ये तो आपको पता होगा, लाइक साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका एक्सपेंशन कितना होगा? कॉस 2 ओमेगा टी डी टी बाई 2, तो 1/2। ये तो बाहर आ चुका है। सो इंटीग्रल ऑफ डी टी 0 to t, integral of cos 2 omega t will be 1/2 omega sin 2 omega t। इसका तो वैल्यू t है, 0 to कैपिटल T। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसका तो t एंड इसका तो 0। दिस इज बैकग्राउंड, आपको शायद पता होगा, so directly I'm writing it. So therefore what is the integral of sin square omega t will be t/2। यहाँ पे डाल देंगे t/2, t/2। This will be 0, then this will become ia by root 2 or ia square by 2 t ib square by 2 plus this will be 0। The value will be ia square plus ib square by 2। ये वाला हमारा आंसर। प्रॉब्लम टॉपिक, द टॉपिक इज बेस्ड ऑन द अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको हायर एमएस पता है तो देयर इज अ मेथड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। Based on the rotational mechanics, rotational motion, solid cylinder is rolling what is the linear acceleration? यहाँ पे हम एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। सॉलिड सिलेंडर, इट इज रिलीज्ड। देन व्हाट आर द फोर्सेस हियर? यहाँ पे mg sin theta, फ्रिक्शन, mg cos theta, नॉर्मल कॉन्टैक्ट, थीटा। देन जो mg sin theta minus f will provide the acceleration of center of mass. Fine, this will provide the acceleration of center of mass. Then torque is set up only by the friction, because you have to discuss the torque about this point. Only the friction will set up torque. Torque due to mg cos theta, normal reaction, and mg sin theta will be 0. So the net torque will be here like this, will be anti-clockwise. This will be an anti-clockwise. Okay, fine. So now what is the equation? यहाँ पे mg sin theta minus f equal to ma, f into r equal to center of mass ic alpha. Solid cylinder, इसका moment of and pure rolling, ac equal to r alpha. F into r, moment of inertia mr square by 2, alpha will be ac by r. So f का वैल्यू कितना होगा? mac by 2। इसका यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। Acceleration of center of mass, let it be ac. AC equal to 2g sin theta by 3. Okay, fine. This is rolling. अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद रहे तो फाइन, गुड, और एल्स यू हैव टू डिराइव। These are the rotational mechanics rolling on inclined plane, very simple. अगला क्वेश्चन ले लेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन तो
In the square loop of side length 1/2 limit, a current of 5 ampere is flowing. Find the magnetic field at its center. यहाँ पे center में कितना magnetic field है? What is the current? Current का direction यहाँ पे दिया है. This is the current direction. We have to calculate the magnetic field at the center. We have to calculate the magnetic field at the center. यहाँ पे what is the center? Center हम यहाँ पे O बना लेंगे. At point O आपको यहाँ पे magnetic field find out करना है. इस square loop में. So let this be theta, alpha, beta. और कौन सा भी ले लो. This is alpha, this is beta angle, and this is the perpendicular distance. So what is this diagram? डायग्राम हम एक बड़ा वाला ले लेंगे. एक bigger diagram I'll draw it. The same thing इसको I'm redrawing it. This is alpha, this is beta, this is the perpendicular distance v. यहाँ पे current I flow हो रहा है. Okay, now what is the magnetic field is center due to one of the wire. B equal to mu naught I 4 pi d sin alpha plus sin beta. 4 pi. D का वैल्यू कितना है? So D will be L by 2. Total length of the wire is L. So D का value will be L by 2. Sin 45 degree plus is sin 45 degree. So total magnetic field कितना हुआ ना? The total magnetic field will be, फिर से या कैलकुलेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ. So this will be 2 pi L value sin 45 degree will be 1 by root 2. 1 by root 2 will be 2 by root 2. So इसका कुल मिला के now this will be pi L root 2. बाद में करंट कितना है? 5 एम्पियर. पाई L का वैल्यू तो 1 by root 2. So this also will cancel. Mu naught 4 pi into 10 to the power of minus 7. Mu naught का वैल्यू into 5. यहाँ पे pi 20 into 10 to the power of minus 7. Net field will be 4 times of B naught. Net field पूछ रहे हैं. So कितना है? Like net field will be how much magnetic field will produce this wire. Same magnetic field AB produce करता है. Like same magnetic field AB produce करता है. Same magnetic field AB, this will also will produce. So net field will be, let me adjust settings. I think visible, complete visible होता है. Yeah. Now net field. So what is the magnetic field is produced? जितना magnetic field A produce करे, same magnetic field is produced by these 3 wires, these 4 wires. So net field चारों के वजह से, like what is the net field? Net field will be 4 times of B naught. 4 into 20 into 10 to the power of minus 5. This will be 8 micro Tesla. So B net value will be 8 micro Tesla. Just based on the magnetic field due to finite wire. What is the name of chapter? Magnetic effects of current, and the subtopic name is Biot-Savart law. तो अगला क्वेश्चन ले लेंगे. For ideal
monoatomic gas undergo an isobaric process. Delta Q equal to delta U. Isobaric process. In isobaric process, what is the pressure? Pressure will be constant. Okay, fine. Pressure will be constant. Agar pressure constant rahe to, then delta Q equal the ratio of delta Q by delta U. So what is the delta Q? Should be equal to NCP delta T. What about delta U? NCV delta T. And this will become Cp by Cv, which is gamma. Monoatomic gas. Monoatomic का gamma कितना है? Will be 5/3. और gamma को पता नहीं. At least we'll start with the Cv. Cv will be 3R/2. And Cp will be 5R/2. So total will become 5/3. This topic is based on the thermodynamics. Thermodynamics and isobaric basic process. Isothermal, adiabatic, isochoric. अगर आपको just like a जो sir, what is Cv? Cv कैसे ले? Cv equal to FR/2. Monoatomic gas degree of freedom कितना है? 3. So 3R/2. So Cp minus Cv equal to R. Cv कितना हुआ? 3R/2. तो इससे हमें Cp मिलेगा 5R/2. वही मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर चुका हूँ. और मेयर्स इक्वेशन, ये तो मेयर्स इक्वेशन. And there's a basic formula from KTG और गैसेस स्टेट केमिस्ट्री से. ऑल सिंपल थ्योरी फॉर्मूला बेस्ड है. इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी जरूरत नहीं है. जितना होता है उतना थ्योरी पढ़ लो, फॉर्मूला रिवाइज कर लो. मोर देन सफिशिएंट फॉर जेईई मेंस. I will take the next question. So I should tell what is जो reality है वही बात करता हूँ. No need to solve साला के important questions. वो भी जरूरत नहीं है. जितना होता है उतना थ्योरी पढ़ लो, एग्जाम जाओ, you can manage. Electron of mass m. Let me read question. An electron of mass m enters in a region of uniform electric field E equal to E0 at T equal with an initial velocity. If the de Broglie wavelength is lambda naught initially, the de Broglie wavelength at time t. What is the direction of electric field? यहाँ पे थोड़ा हम rectangular coordinate system draw कर लेंगे. This will be y-axis, x-axis. This will be z-axis. Minus E0 k. So यहाँ पे E bar is into the plane. And the particle electron बोल रहे, it is having velocity v0. The de Broglie initially इसका wavelength कितना है? lambda naught. उससे हमें initial velocity मिलेगा. The de Broglie wavelength at a time t, after some time t. यहाँ पे in what direction the electrostatic force will act in this direction. Sorry, it will act in this direction. इसका path charge particle, इसका path इस तरह होगा. After some, it will move in xz plane. बाद में it will be like this. Vx and Vz. This will be V. Vz to parallel. Vx to change नहीं होगा. It will remain V0. What is Vz? Vz equal to simple. We can apply the basic conservation of angular momentum. Then इसके लिए क्या करेंगे हम? Just kinematics, not conservation of angular, kinematics. Sorry. So ये Vz किस लिए आता है? So this electrostatic force will accelerate it. So इसका हम Vz after some time t, Vz equal to Az into t. Az का value तो q E0 by mass of electron m into t. The de Broglie wavelength at time t. This was the question asked. So then what is the net speed? The net speed will be Vx square plus Vz square. So Vx square will be V0 square. Vz square will be QET by M0
Q means charge of electron. Q means charge of electron. Okay, this will be Q naught. ये तो हुआ हमें हमारा so E naught. Then so what we do is asking new de Broglie wavelength H into MV. यहाँ पे simplify करेंगे M. This will be V naught square Q square E naught square T square M naught square. We'll take V naught outside 1 plus H by MV naught will become lambda naught. Okay, this will be our option. What is this topic based on the matter waves? De Broglie matter waves. Very simple concept is only this one. Yeah? Just डरने के no need to worry. इसमें डरने का कुछ भी नहीं है. Like lambda equal to h by m naught. सर मुझे de Broglie wavelength पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है. Not needed for exam point of view. Lambda equal to h by mv. Momentum of particle. Any particle having mass or possesses the momentum will have the de Broglie wavelength. Possesses momentum. Photon को भी de Broglie wavelength रहता है. So अगर आपको this basic formula याद रहे तो you can manage it. बाकी ये तो kinematics है. No need to draw this diagram also. इसका diagram का भी जरूरत नहीं है आपको. There is no necessity of this diagram. मैं तो यहाँ पे explain करने के draw कर रहा हूँ इसको. Sir, why it will take path like this? आपको पता है कि there is a velocity and the force. It will start moving in a parabolic path. Then at any instant of time, z component is due to electrostatic force. X component, there is no force, so velocity remains as it is. The vector sum of this. Then simple idea. अगला question ले लेंगे. The distance between two parallel plate of a capacitor is d. If we then find the energy stored in capacitor, I think this is the most easiest question. यहाँ पे capacitor draw कर लो. Distance between the plates कितना है d, a, and E is electric field. अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो गो फॉर एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. देन एनर्जी कितना, दिस इज कॉल्ड लाइक एनर्जी डेंसिटी फॉर्मूला. This is called like energy density formula. So energy equal to energy density into volume of epsilon naught E square. Volume of this capacitor will be A into D. So epsilon naught E square AD by 2. This is the energy of capacitor. This will be your answer. So the problem is based on the capacitor chapter. Basics of capacitor, energy of capacitor, वो भी याद रहे तो you can manage. Energy of capacitor is Q square by 2C. यहाँ पे E कितना है? E is Q by A epsilon naught. C equal to कितना हुआ? F naught A by D. I think you can manage. A भी substitute कर लो. For that you'll get answer in terms of E. There's a basic formula for energy of capacitor. No need of paper discussion. ये जो हालांकि आप खुद theory पढ़ लो and start using जो भी theory है, you can manage. Paper तो very easy. A particle of next question. A particle of mass m is projected with initial velocity v at an angle 45. Find angular momentum at highest point. So ये तो projectile. There's a ground and we are projecting it with a speed u at an angle. At highest point इसका कितना होगा? Velocity u cos theta. Vertical component तो change होता रहेगा. U sin theta, u cos theta. Then यहाँ पे angular momentum पूछ रहा है. So this will be h. About what point? About point 2. What is the formula? L is equal to r bar cross mv bar.
आर बार तो वेक्टर ए हुआ आर बार, देन दिस विल बी आर एम बी सम साइन फाइव रख दो इसको. व्हाट इज फाइव? एंगल बिटवीन आर बार एंड वी बार. सो आर साइन फाइव इसको अलग कर दो, एम बी आर साइन फाइव. So from the diagram, sin phi is equal to h by r. This one, this one. This is r bar. This is v bar. So what is the angle? A over this angle phi. This. Sin phi कितना हुआ ना? Sin phi is equal to h by r. So r sin phi. R sin phi will be h m. V का वैल्यू कितना है? U cos theta. What is h equal to? U square sin square theta by 2g. So what is the angular momentum now? About 0.2. Magnitude पूछ रहे हैं. So m u cube sin square theta. यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. m u cube sin square theta cos theta by 2g. थीटा वैल्यू, थीटा तो 145 है. m u square 2g sin square theta 1 by root 2 whole square और बाद में 1 by root 2. mu cube by 20 root 2. लेट मी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, जगह नहीं मेरे पास. ओके, एल नॉट. सो इसका एम यू क्यूब हुआ रूट टू होल स्क्वायर. रूट टू होल स्क्वायर मीन्स 1 by 2 440 इंटू जी रूट 2. जी का वैल्यू कितना? 10. तो एम यू क्यूब बाय 4. 4 इंटू जी विल बी 10. 40 root 2. That you only are making V naught. There's a formula. So topic based on the kinematics and also on the rotation motion. There's a formula. And बाकी बचे सो आपको ये दोनों फॉर्मूला याद रहना चाहिए. एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल r क्रॉस mv एंड उसके बाद मैक्सिमम हाइट असेंडेड u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g. अगर ये दो फॉर्मूला याद रहे तो यू कैन मैनेज दिस क्वेश्चन. ये तो बाकी सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. A particle is performing SHM of amplitude and time to find the ratio of distance traveled by the particle in कितने टाइम में? Like is asking in 12.5 seconds. तो यहाँ से t equal to 0 स्टार्ट होगा. Then कितना टाइम लेगा? Like 2 seconds for one oscillation. तो कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर. तो t को 0 यहाँ पे स्टार्ट हुआ, 2 सेकेंड्स यहाँ पे 12.5 सेकेंड्स. तो इसके लिए तो 5 राउंड कंप्लीट करना पड़ेगा. सो दिस विल बी तो 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds. 12.5 ना. So one more last. कितना हुआ? 12 seconds. 0.5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस करता है? कितना लाइक 2 सेकेंड्स. तो 12.5 सेकेंड्स तो यहाँ पे आ जाता है. यहाँ पे काउंट कर लो कितना डिस्टेंस है. डिस्टेंस कितना होगा?
ये तो लगे in one oscillation it will be 4. यहां तक आने के लिए कितना ऑसिलेशंस कंप्लीट करना पड़ता है? 6 ऑसिलेशंस. तो ईच ऑसिलेशन में डिस्टेंस कॉर्ड कितना है? इन ईच ऑसिलेशन एस नॉट विल बी 4 सेंटीमीटर. देन हाउ मेनी ऑसिलेशंस? ईच ऑसिलेशन यहाँ पे 2 सेकेंड है, 6 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है. सो इसके लिए तो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी 6 एस नॉट, बाकी 1 सेंटीमीटर. 0.5 सेकेंड में 6 into 4 plus 1. So this will be 25 centimeter. No need of formula. आपको बेसिक एसएचएम का अगर कॉन्सेप्ट याद है तो कैन मैनेज. दिस इज वन ऑसिलेशन. तो कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 4 सेंटीमीटर. बाद में दिस इज अनदर ऑसिलेशन. कितना डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ तक? तो 8. देन आफ्टरवर्ड्स दिस इज वन मोर ऑसिलेशन. ऐसे काउंट कर लेते जाओ. सो विल गेट ए बेसिक पिक्चर. प्योरली डायग्राम बेस्ड. अगर आपको ए डायग्राम इमेजिन करना आता है तो देयर बी स्टिल मोर, नो नीड टू ड्रॉ डायग्राम. काउंट कर लो कितने ऑसिलेशन से. 1 2 3 4 5 6 ऑसिलेशन. और बाद में 0.5 सेकेंड में इट विल मूव फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम. सो कितना डिस्टेंस कवर होता है यहाँ पे? 1 सेंटीमीटर. और कितना टाइम लेता है? 0.5. सो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 24 प्लस 1 विल बी 25. This concept is based on SHM, a simple harmonic motion. Kinematics of SHM subtopic. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. What is relative focus shift of focal length of when optical power is increased from 0.1 D to 2.5 D? यहाँ पे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं. नो, आपको तो पता है पावर इक्वल टू 1/r. हम पहले F1 कैलकुलेट करेंगे. 0.1 D. 0.1 D. इसका कितना है? 1 D है. इसका फोकल लेंथ डायोप्टर. So this will become 10. F2 equal to 1 by power P2, 2.5 diopter. So this will be 10 by 25. So shift, relative shift. So ये हुआ F1 minus F2 by F1. 1 minus F2 by F1. F2 का value 10 by 25. And this one will be F1 का value 10. 1 minus 1 by 25. So 24 by 25. This will be relative change in the focal length. Relative, sir, यहाँ पे what is the meaning of relative? Relative बोले तो what we should think? Relative shift of focal length change minus initial, that we'll call relative shift. We'll take the next question. Problem based on ray optics. So this topic is ray optics lens. Subtopic name is lens. There's a problem based on the surface tension. A drop of radius r is split into 27 equal drops. यहाँ पे एक बड़ा वाला ड्रॉप है. इसको हम स्प्लिट करेंगे. कितने ड्रॉप्स में स्प्लिट होगा ये? 27. ड्रॉप का नंबर 1 2 3 4 5 6 7 27. इसका रेडियस 9 होगा स्मॉल आर. The work done is, if the same big drop is split into 64 equal drop, the work done.
या तो हमें सरफेस एरिया के बारे में थोड़ा वर्क डन इक्वल टू सरफेस इनटू चेंज इन एरिया. So 24 will be the volume 4/3. यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब. There's a 4/3 pi r cube. This should be equal to 27 into 4/3 pi r cube. This is a conservation of mass. Density same रहेगा, mass तो same रहेगा. So therefore the volume will be conserved. So r cube 4/3 तो cancel हुआ. This will be 27 r cube. बल्कि r will become equal to, this will be 3 cube into this one. R equal to 3r. So r का value कितना है? r/3. What is the work done? पहले सिचुएशन में वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन into change in surface area 4 pi r square minus 27 4 pi r square. What is the concept? Concept is based on the surface tension. Work done equal to surface tension into change in area. So 4 pi outside ले लेंगे, r square minus 27. स्मॉलर का वैल्यू कितना है? r/3 होल स्क्वायर. इसका फिर से कैलकुलेट करेंगे. r स्क्वायर भी 12 आ जाएगा. 1 minus 27/9 will be 3. So this will become 8 pi r square t. So final minus initial लेना पड़ता है मुझे. Actually I took initial minus final. Final actual minus initial. Okay, fine. I should take final minus initial. Okay, no problem. It will be actually positive. Then इतना हुआ. So what is the work done? So this is equal to 10 joule पूछे. Now इसी को हम 64 ड्रॉप में स्प्लिट अप करते हैं. अगर हम इसको 64 ड्रॉप में स्प्लिट अप करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, this is 64. Call this is a radius. Then mass will be conserved. 4/3 pi r cube should be equal to 64 into 4/3 pi a cube. R cube equal to 4 cube into a cube. So r equal to कितना हुआ? 4a. So a equal to 4 by r/4. Then work done is equal to surface tension into change in area. 64 into 4 pi a square minus 4 pi r square. 64 into 4 pi t. 4 pi t बाहर ले लेंगे. 64 a का वैल्यू will be r/4 whole square minus r square. 4 pi r square t. 8 minus 7. 64 by 4, 16. 64 by 16 will be 4. Okay, it is only 4. So this will become 12 pi r square t. Work done how much? Now pi r square t, what we can write? Pi r square t will be 10/8. इसका वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. pi r square t will replace with this. So 10/8. So this will be 3 into 10/2. 15 joules. वेरी गुड क्वेश्चन. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है सर. लाइक ए वाला व्हाट इज द बेसिक आइडिया जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं? दिस इज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ मास. टोटल मास विल रिमेन सेम. जितना भी मास है, द सेम मास. लिक्विड मास ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज. नो, देन डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट. सो देयरफॉर द वॉल्यूम शुड बी कंजर्व्ड.
the same thing. There's a concept. बाद में the formula work done equal to sufficiency into change in area. There's another formula you should remember. It's also simple theoretical question, not something conceptual. It's not conceptual, just theoretical information. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. In a process, the gas pressure pressure of gas is directly proportional to temperature. Then the choose correct option. If the pressure of gas is directly proportional to temperature, PV equal to nRT. P and T are constant, so then V equal to nRT by P. T by P is constant. So ये तो हुआ volume constant, volume भी constant होगा. So then the process will be isochoric. In isochoric process, work done will be 0 and delta U is equal to NCV delta T. I think directly यहाँ पे तो isobaric process के बारे में पूछ रहे हैं. Thermodynamics concept. Process is isochoric per statement. Work done is 0. Delta U equal to NCV delta T. So यहाँ पे तो सभी options correct है. We'll pick up this one. Pure theoretical information. जो भी पढ़ते हो वही आ रहा है एग्जाम में. No need to practice important question. No need to practice PYQ also यहाँ पे. जितना आप theory पढ़ते हैं फॉर्मूला याद करो, एग्जाम जाओ, बस enjoy. ये वाला क्वेश्चन. Force F equal to alpha plus beta x square is acting on a body which displaces it 0 to 1 meter. If the total work done process 10 joule, find the value of beta given alpha equal to 1. So this is a simple mathematical F bar dot dx. Alpha beta x square dx. Then this will be from where 0 to 1. X 0 to 1, beta x cube by 3, 0 to 1, alpha into 1, beta by 3. This is also 1 cube, minus 0 cube. So कुल मिला के this will be alpha beta by 3. Work done का value कितना है? 10 joule. 10. Alpha का value कितना है? 1. Beta के बारे में पूछ रहे हैं. So beta will be 27. There's a formula. There's a topic based on work per energy. And work done by variable force, subtopic. And ये तो basic formula. अगर सभी को याद रहेगा. If a force is variable, then we have to go for integral of f dx. And force and displacement are in same direction. So therefore the angle between them is 0. Cos 0 will be 1. Next, ये तो क्वेश्चन थोड़ा सर्कुलर मोशन, बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन. बैंक रोल. आपको क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही द वर्ड से आपको टॉपिक को एस्टिमेट करना पड़ता है. बैंक रोड पूछ रहा है. बैंकिंग कौन सा टॉपिक में सर्कुलर मोशन में आता है. तो ऑन ए बैंक रोड, car is moving with maximum velocity in circular path. Find the value of V naught if quotient of friction is mu. अगर फॉर्मूला याद रहे तो you have to pick up option, नहीं तो यहाँ आपको डिराइव करना पड़ता है. What are the method? लेके हम यहाँ इस तरह कर लेंगे. ये तो बैंकिंग. जैसे कार को ही हम जैसे एक ब्लॉक जैसे दिखा रहे हैं. हम जो भी फोर्सेस एक्ट होता है N, देन mg sin थीटा, यहाँ पे mg cos थीटा, देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर r और mv नॉट स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. फ्रिक्शन तो डाउन द रोड.
You can resolve ये तो problem आप आपके मर्जी से लेके. You can do this in any possible way. ये वाला तो थीटा होगा. We'll just resolve the forces along x, along y. This will be, or along the incline, parallel to incline. It's left to you. So यहाँ पे road कौन सा है? This the road. और ये वाला vehicle, car. So we'll resolve along the incline. इससे पहले n will be n minus mg cos theta mv naught square by r sin theta equal to 0. This is normal to incline. ये वाला तो normal. This will be parallel. Parallel to road, better. Normal to road, parallel to the road. Parallel to the road, mv naught r square cos theta minus mg sin theta minus f equal to 0. What is f? F equal to mu n mv naught square r cos theta बाद में इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे. cos theta minus mg sin theta. n का वैल्यू तो एल सब्स्टिट्यूट है. mu mg cos theta minus mv naught square r sin theta. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहे हैं. ओके, विल डू वन थिंग, इसको हम बाहर निकाल देंगे. तो म्यू विल बी, यहाँ पे एम तो कैंसल हो जाएगा. बी नॉट स्क्वायर cos theta r minus g sin theta by g cos theta. ये तो प्लस हुआ ना, प्लस बी नॉट स्क्वायर आर साइन थीटा. यहां से हम विल टेक सम फर्दर सिंप्लीफिकेशन. cos थीटा कॉमन ले लेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ v नॉट. ओके, सॉरी, v नॉट के लिए सिंप्लीफाई करना है. आई डिडंट सी क्वेश्चन प्रॉपर्ली. v नॉट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी v नॉट स्क्वायर r cos theta minus sin theta equal to mu sin theta और g sin theta plus mu cos theta. So v naught will be r तो यहाँ पे है. Cos theta also will take common, so this will become g tan theta. g भी बाहर आ जाएगा ना. mu g cos theta. So g r tan theta plus mu 1 minus mu tan theta. ए बी फॉर्मूला है, अगर याद है तो ओके, और एल्स यू हैव टू डिराइव इन एकदम. थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है. सर व्हाट इज दिस? यहाँ पे जो आप लिख रहे हैं, दिस इज पैरेलल टू रोड. वी आर इक्वेटिंग फोर्सेस पैरेलल टू द रोड, नॉर्मल टू द रोड. यहाँ पे एन mg cos theta इसका component. Parallel to the road, friction mg sin theta and component of this. Equating and solving for v naught.
This will be so based on the circular motion. So these are our option. Banking of road. I think there's also a direct formula is there. Better to remember things and go to the exam. A wire of resistance 9 ohm is bent to form equilateral triangle. यहाँ पे वायर है, इसको हम बेंड करेंगे. इसका 3 ओम 3 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस ऐसे रख दो बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स. ए वाला तो पॉइंट हुआ. सो ए बी सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये दोनों 3 विल बी सीरीज. इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ? 6 ओम 3 ओम ए. This is B. RAB equal to 6 into 3 by 6 plus 3. 18 by 9. 2 ohm. What is the concept? Concept is based on current LCT series parallel. Resistor series parallel. आपको ये डायग्राम जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है. बिना डायग्राम आप कुछ नहीं कर सकते. इसके लिए थोड़ा बहुत इंग्लिश नॉलेज भी चाहिए. जस्ट सिंपल वायर ऑफ रेजिस्टेंस बेंट इनटू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. जो भी रेजिस्टेंस का वायर है कितना 9 ओम उसको हम इक्विलेटरल टाइम बेंड करके अक्रॉस साइड्स में व्हाट इज द रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस. द इंटरप्रिटेशन चाहिए. लेके बिना डायग्राम आप लेके वी कांट थिंक. क्वेश्चन इज वेरी इजी बट थ्रू डायग्राम ओनली वी कैन मैनेज. टाइम पीरियड के बारे में पूछ रहे हैं. सो टाइम पीरियड ऑफ सेटेलाइट. देयर इज अ वन सेटेलाइट. There's another satellite. यहाँ पे satellite R, another satellite. What is the radius? 1.03 R. Satellite 1 orbital velocity v1. Satellite 2 इसका orbital velocity v2. What is the time period formula? T1 equal to 2 pi R cube by GM. You have to really make this problem very easier. GM by R square will become RG. ये वाला होगा टाइम पीरियड. सो यहाँ पे सर व्हाट हैपन, यहाँ पे हम आर स्क्वायर बाय जी एम को जी रिप्लेस करेंगे. देन दिस विल बिकम आर बाय जी. दिस व्हाट द थिंकिंग यहाँ पे. सो व्हाट इज द टॉपिक नेम सर? ग्रेविटेशन एंड द टू सैटेलाइट्स. टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट्स. सो व्हाट इज द T1? T1 इज दिस मच. व्हाट इज द टाइम पीरियड? T को 2 पाई इसका इस तरह लिख दो. The time period of B is greater than A by. So T2 equal to 2 pi. 2 pi RG, we can write it as T1, no? So by what parameter it is greater, पूछ रहे. So how to calculate that greater? Hello kids, like yeah, तो this one we are getting percentage means we'll end up with delta T1 by T1 1.4%. We don't have option. The option 1 is given. The reason like we can solve by the other one. So we know like a time period T is equal to 2 pi R cube by GM. So therefore T1 square equal to 2 pi R cube by GM. Then T2, the radius will be 1.03 times of R whole cube by GM. So this will become T2 square or T2 square by T1 square equal to R cube by, this will be 1.03 R cube.
this will be T1, this is T2. So therefore T2 should be equal to 1.03 whole cube, 1.03 whole cube into T1 cube. So T1 square, T2 square. So T2 is equal to 1.03 3 by 2 T1. Now we have to consider complete the effect of that one. Even G also varies, depends on R. So this will become approximately T2 equal to 1.03 into 3 by 2. Change is asking delta T is equal to T2 minus T1 by T1. पहले delta T calculate करेंगे. So this will become 1.03 3 by 2 T1 minus T1. We have to calculate T2 no. एक काम करेंगे. One 1.03 to the power of 3 by 2. It's equal like a cube root of this. या तो हमें this one we have to calculate. हम call alpha. So this will become T2 by T1 minus 1. T2 by T1, how much it will be? 1.03 to the power of 3 by 2 minus 1. इसका cube, that's very small, so 1.03 into 3 by 2 minus 1. So this will get around 4.5% when we solve. A little bit mass calculation. Why means even the G also depends on capital R. This will be correct approach. This one is correct. This one is wrong. We'll take the next question. Which of the following will increase the capacitance by a factor? By factor of 10. L का value पहले कितना है 3, so capacitance earlier value of capacitance will calculate. Epsilon naught A by D. Area of cross section will be 3 centimeter square. Separation is 3 micrometer. And A wala to centimeter square. Then new capacitance, which will increase by 10 times. 10 C naught ले लेंगे. Then epsilon naught A by D. So कौन सा इसमें satisfy होगा? 10 to power of minus 4, A वाला 10 to power of minus 6. यहाँ पे epsilon naught AD L and B का value. So what is A? A तो L and B ले लेंगे. Epsilon naught तो cancel हो चुका है. So 10 into 3 cancel हुआ. So into 10 to power of 2. That everything should satisfy this one, the values of L and B. So it will satisfy this one. No? अगर आप A ले लेंगे, it will satisfy this one. There's also a simple formula based. The topic is based on the capacitors. शायद I think दो questions है. एक maybe like a very order collected. दो questions may not ask from same topic. अगला वाला. Electron jumps from principal quantum state by releasing photon wavelength and from state B releasing photon. The final wavelength of the photon from transition A to B. When it makes a transition from, we'll draw the quantum states. A, electron jumps from principal constant A to C.
A to C का वेवलेंथ कितना है? Will be lambda AC. Lambda AC is how much? 2000. And B to C, the transition is how much? Lambda BC, 6000. From A to B, what is the wavelength? Is asking. So energy, delta EAC should be equal to delta EAB plus delta EBC. Now delta EAB is asked. So delta EAC minus delta EBC should be equal to delta EAB. Delta EAC will be H by lambda AC, H by lambda BC, HC by lambda AB. SC will get cancelled out. Lambda AC is 2000 minus lambda BC will be 6000 equal to lambda AB is being asked. So solving this will end up with 3000. There's a problem based on atoms, excitation of hydrogen atom concept. So this diagram is very important. अगर आप एक diagram draw करोगे, little bit easier for you. यहाँ से आप equation ले सकते हैं, the energy. Then energy equal to SC by lambda. Solving this, we'll get this one. We'll take the next one. This is based on the experimental physics. The topic name is experimental physics, screw gauge. Initial least count of screw gauge is 0 point. Then its pitch is increased and number of divisions is increased by. Find the new least count. So what is the least count? Least count will be the pitch by number of divisions. Pitch is increased by new least count. The new least count के बारे में pitch is increased by 75%. Increase it by 70%. So this will become P dash by N dash. Increase by 75% means delta P equal to P dash minus. It is increased by 75%. So P dash का value कितना हुआ ना? P plus 0 also like it will be increased by 1.75 होगा ना? P plus 0.75. So will become 1.75. Decrease it by 55 will become N dash will become 0.5. So this will become 1.75, 0.5. Least count इसका value कितना है? 0.01 millimeter. 0.001 millimeter into 1.7 by 0.5. This will become 0.0035 millimeter. You have to, this idea, increase it by, like this, we'll get it. I think it's mass. There's only, what is the concept? Concept to, there's the concept. Least count equal to pitch by number of circular division. बाद में this everything is mass. जो मैं लिख रहा हूँ. We'll take the next question. In YDSC, two lines of wavelength lambda 1, lambda 2. Find the minimum number of lambda 1s which will coincide with any maximum of other color. Now this is about the like a chromatic light, YDSC with chromatic light. That concept is what we are applying. Now this will be two lights of wavelength which will coincide. So coincide के लिए this is a condition. N2 lambda 2 by capital D. So this will become N1 lambda 1 equal to N2 lambda 2. Okay, then N1 का value कितना है? N1 पता नहीं. Lambda 1 will be 480. Lambda 2 will be 600. So N1
480, 600. This will be 8 and 10. So this will be 4 and 1 equal to 5 and 2. Find the number of lambda ones which will coincide with this one. N1 by N2. N1 should be equal to 5, N2 equal to 4. So the option will be fine. Based on the wave optics. So what is this? Like a coincide. जितना like a जो भी like a magma side n1 equal to 5 will merge with n2, find the minimum number of lambda ones which will coincide with any maxima of other color. There are 5 maximas of lambda 1 which will merge with the 4 maximas of the lambda 2. There's a meaning there. Merge both. Coincide means merge. Find the ratio of focal length of lens and liquid to that in air if the lens is made up of material and the whole system is dipped in a liquid. Find the ratio of focal length of lens in a liquid to that in if the lens is made up of material. Focal length. Earlier यहाँ पे हमारा एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले म्यू दिस इन है, इसी को हम क्या करेंगे, नाउ वी विल डिप दिस इन ए लिक्विड, देन इसका फोकल लेंथ के बारे में पूछ रहे, तो म्यू ये तो चेंज नहीं होगा म्यू, देन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल, यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम है, वी आर इमर्सिंग दिस इन ए लिक्विड, दिस इज लिक्विड एंड होल सिस्टम इज डिप्ड इन लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टेंट, इसका फोकल लेंथ पूछ रहे, इसका हम f1 करेंगे, इसका f2 करेंगे, व्हाट इज f1, f1 इज इक्वल टू 1 बाय f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r माइनस ऑफ माइनस 1 बाय r, वैल्यू इसका तो वैल्यू 1 बाय f1 म्यू 1.5 माइनस 1 2 बाय r, then f equal to r. ओके फाइन, नाउ बाद में इसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय f2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाद में सराउंडिंग लिक्विड का कितना है 1.2 माइनस 1 बाय r माइनस ऑफ माइनस 1 बाय r, दिस विल बी 0.3, 15 by 2, 5 by 5 by 3, 5 minus 2 by 3, 15 by 12, 5 by 3 होगा, 5 by 3 minus will be 2 by 3, 2 by 3 into this will be again 2r, r का वैल्यू f1 रख देंगे, find the ratio of focal length in liquid to that in air, in liquid में कितना है f2 है, f2 equal to 3f1 by 4, so f2 by f1 कितना हुआ ना 3 by 4, 5 by 5 by 3, 5 by 3 minus 1, ये तो 2 by 3 हुआ, so 2 4 by 3, इसका वैल्यू कितना 1 by 2, 1 by 2 into 2 by r will become only 1 by r, so f1 equal to r. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, ये वाला कैलकुलेशन ये तो 1.5, 5 by
5 by 4. 5 by 4, 5 minus will be 1 by 4. यहाँ थोड़ा गलती हुआ. तो A वाला total हुआ 1 by 2R. 1 by 2 F1. तो F2 by F1 पूछ रहे हैं. F2 by F1. F2 by F1 will be F2 equal to 2F1 will be 2. थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पे गलती हुआ. Okay, this is based on the ray optics lens maker formula. अगला क्वेश्चन ले लेंगे. Find the radius of curvature. Refraction spherical. A system is dipped in the liquid of mu equal to 1.2. Focal length of system in the liquid is 0.2. Find the radius of curvature. And this is based on the refraction spherical surface. And then find the radius of curvature. इसका you have to calculate the value of R. What is the method? Like no, this is the lens, and it's a silver lens. This is immersed in a liquid. इसका तो refractive index. Dipped in liquid. Find the focal length of system. The focal length of system बोल रहे. So this everything is को हम immerse कर चुके हैं. कहाँ पे? Liquid में. Very good question. Yeah, very good question. Silver lens in a liquid formula. Simple idea. ये जो वाला हुआ liquid है, इसका तो mu है, mu L कर देंगे. The system is dipped in a liquid. Mu naught इसको कर देंगे, इसको mu कर देंगे. That of the liquid. So this everything is equal to again. ये जो everything will become concave mirror है. इसका focal length कितना है? 0.2 मीटर माइनस. ये तो concave mirror ही होगा. Then what is the formula? This is equal to, actually इसको हम replace क्या करेंगे? Lens immersed in a liquid plus plane mirror. ये तो बाद में concave mirror होगा. Then there's everything इस तरह. Because the plane surface is silvered. Now हमें F पता है, so we have to get this R. Mu naught. Find the radius of curvature. So यहाँ पे हम formula यहाँ से start करेंगे. 1 by F equal to 1 by FM minus 2 by FL. FM तो A हुआ and this is FL. 0.2 meters. So in centimeter कर लेंगे. So this will be minus 20. ये तो R will be infinity by 2. Radius of curvature इसका तो infinity है. 2 by FL का value mu naught. Refractive index काम करेंगे mu L. इसका तो refractive index mu G glass दिया है. Let me use symbols. तो इसका तो mu G by mu L minus 1 by R minus 1 by R. 1 by FL का डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ. So this will be minus 1 by 20, 0 minus 2. Mu G का वैल्यू 1.5, 1.2 minus 1, 2 by R. तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो चुका है. So R equal to 10 centimeter. This will be radii इसका. Okay, next question. So this problem based on the ray optics silver lens concept. Silver lens idea. I have to go to college. मेरे को टाइम हो रहा है, तो 2 क्वेश्चन अभी मैं फिनिश कर देता हूँ.
Gauge pressure inside air bubble is 2100. Sufficiency of the bubble is T. Find 100 T. No, there's a liquid. यहाँ पे गेज प्रेशर पूछ रहे हैं. So where is the air bubble? A वाला air bubble. Then यहाँ पे pressure P1 equal to P2 plus 2T by R. P2 will be P0 plus rho GH. P2 means pressure यहाँ पे. This is the air and pressure inside P1. Gauge pressure means P1 minus P0. इसको हम gauge pressure बोलते हैं. Pressure minus P0 will become gauge pressure. इसका वैल्यू कितना है? Gauge pressure 2100 equal to rho density of water 1000 G10. H will be 20 centimeter 0.2 into sufficiency पता नहीं. Then radii of the bubble 0.1 centimeter 0.1 into 10 to the power of minus 2. 100 T is asking, so this will be 100 T will be fine. Okay, fine. So these are some questions what I collected 2025, 24th January, 24th shift morning. The paper is called as easy and formula based. यहाँ पे आपको around to score 99 percentile. If you score around 65 marks, no, in physics, it will be 99 percentile. Okay, bachcho, so this was about the 24th January morning shift. The paper is easy. So 99% के लिए आपको करीब around 60 to 65 marks अगर आप score करोगे तो then you will end up with 99 percentile. So paper like is a purely formula based. So just आपको theory अगर formula याद रहे तो you can manage. इसमें से around 2-3 question hard है, 2 question hard है, बाकी बचे so 23 are very easy. The simple theory and formula based. Okay, now we'll see the this one 28 morning shift paper. Shortly I'll upload it. Thank you all of you.